So, Namaste, Rashiram, and today's topic of discussion is Op Sindoor, which has been till now around 2.5 months have passed, or only one part has been commenced till now. Everyone was waiting कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कब आएगा, बट ये पाकिस्तानी कुछ कर ही नहीं रहे हैं कि अपन रीस्टार्ट कर सकें. आई मेड दिस स्क्रिप्ट क्योंकि एक ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन था, बट आई वॉज टू टायर्ड टू टाइप इट एंड सबमिट दैट ऐसे. नॉट टायर्ड, आई वॉज टू लेजी टू डू इट एक्चुअली. तो मैंने वो कभी वो ऐसे भेजा नहीं, बट लुक हेयर टुडे मेरे को कंटेंट मिल गया. माई लेजीनेस टुक ओवर मी एंड दैट ऐसे वॉज नेवर टाइप्ड. मैं वो भी कर सकता था, आई कैन जस्ट स्पीक इट आउट टू चैट GPT और वो मेरे को लिख के दे देता. मेरे को वहाँ से कॉपी में पेस्ट मार के सबमिट करना था, बट आई एम अ लेजी सोल. या फिर मेरी प्रायोरिटीज़ उस टाइम अलग थी. आई वॉज नॉट सो मच फुल विद एनर्जी. तो इवन आई थॉट कि मैं जीतूँगा थोड़ी. दे वर इन्वाइटिंग 100 people टू वॉट बी विटनेस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे परेड. मुझे पता था 4,000 लोगों ने दिया है. मेकिंग इट इन दी 100 इज़ एक्चुअली अ बिग थिंग. इट्स नॉट लाइक आई कांट मेक इट, बट आई जस्ट कुडंट बिलीव माई सेल्फ एट द टाइम. तो मैंने कहा बाहर में जाए. सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑप सिंदूर. Know you're probably blacked out how the other night last. Maybe come around for a minute. So let's start with the provocation. So what Mullah Asim Munir did, he provocated us in a speech. He actually provocated कि आप लोगों में, हिंदू में और मुस्लिम में there are many differences. The reason Pakistan was created was for these differences, और हमें अलग रहना था. They said that we cannot exist together. This is what he said. Someday after he gave this speech, it was noticed that on the 22nd of April, Pahalgam attack happened. तो क्या हुआ फिर? पहलगाम अटैक हुआ. उसके बाद कुछ महीनों बाद, कब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मई 7-8 मई के आसपास वी लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर. मेरे पास डेट नहीं लिखी है, बट इफ़ आई हैव टू टेक अ वाइल्ड गेस, 7-8 मई के आसपास वी लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर. वो भी रात में हुआ था. आई थिंक इट वॉज ऑन द मॉर्निंग ऑफ 8th, 1-2 बजे के आसपास. इन अराउंड a few minutes we destroyed 9 terror camps, or later on striking the military installation that Pakistan repelled via military means. तो we were capable of doing that, but एक चीज़ जो 2.5 महीने में बाहर आई है, that thing is one F-16 has been down, one JF-17 has been down, one Saab 2000 has been down, and only one Rafale has been down. ये चूतिए 5-5 चिल्ला रहे थे, but those were Banshee jets and X-ray, what was the term for that, a device which was actually leaking out the electromagnetic signals of a Sukhoi and a Rafale. तो मुझे नहीं पता इन लोगों ने कितने Banshee jets मारे और कितने डमी Rafales. तो these guys have claimed 5. वेल FATF में तो अपन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, दैट इज़ ट्रू. बट द पाकिस्तान, आई डोंट इवन थिंक दैट देयर कोस्ट वाज ब्लॉक्ड. नो, इट वाज नॉट. बट रेदर देन आर हाई कमान, बाय हाई कमान आई मीन द पीपल सिटिंग इन द पावर, प्राइम मिनिस्टर आई एम टॉकिंग अबाउट. what he did was necessary, but what happened was not what I imagined. अगर आप अग्रेसिव मीन्स पर जा रहे हैं एंड इफ़ यू एक्चुअली थिंक कि दिस गाइज शुड लर्न अ लेसन, तो द रिस्पॉन्स शुड हैव बीन लाइक दैट. द रिस्पॉन्स वॉज नॉट लाइक दैट, एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान हैज़ लर्न द लेसन येट. हाँ, बट पाकिस्तान हैज़ अंडरस्टूड कि अब अगर आप इंडिया को प्रवोक करेंगे, देन द रिस्पॉन्स इज़ गोना बी सिमिलर टू दिस. एंड बाय सिमिलर टू दिस आई मीन कुछ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ नॉट सफर्ड अ ग्रेट डैमेज. One HQ-9 battery was down, the aircrafts I mentioned were down, and radar system was down, their runway was obliterated. Actually, a lot of runways were obliterated, a lot of airports were destroyed, air bases I should say.
नूर खान में जो हुआ सबने देखा. Even America panicked. Turkish officials were killed. Turkish military officials. This news came via unofficial means. Pakistan never acknowledged it. Neither did Turkey. But ठीक है, आग से खेलोगे कुछ तो मिलेगा टर्की को भी. And India recently offered a long-range surface-to-air missile (LRSAM) to Cyprus and Greece. If I am not wrong, I also watched a news short in which they were saying that India has also offered BrahMos to Cyprus. मज़ा आने वाला है भाई, और करूँगी. That is what I am saying. So the thing is, what Pakistan's aggression is, it is cultivated irrationality. ये लोगों की cultivated irrationality, what I mean by this is, these guys don't think before doing anything. They don't have a reason to attack you. The only reason they are attacking you just because you are a country that was based on a Hindu sentiment. हमारे पास आपको मारने का कोई रीज़न नहीं है, बस हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि आप हिंदू हो. That's the reason of it. That's cultivated irrationality. Sindoor, our security, our army, our defense forces, our, I won't comment ki how they have done. Actually, I am no one to comment on it. I know if they are provided or given a responsibility to do a thing, then they are gonna do it in the most efficient, most ruthless and the most inhuman way possible for the सामने वाली side. Indian Army is a force that was made for the Indians by the Indians. Okay, ये ज़्यादा हो गया. So it was made to protect the Indians basically. It does not serve a government, it serves the Indians. Pakistan के लिए अलग है. Pakistan Army serves the regime sitting over there, which is actually the army. So the soldier is fighting for his army, while the Indian soldier is fighting for the people, the country. उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर कौन बैठा है, whether it be a leftist, rightist, communist, socialist, capitalist, जो भी हो. So I would like to point out and actually comment तालियां for our Akshtir, the L90 guns, the Akash systems, the S400. I heard कि S400 actually made a record of killing a Pakistani Evox, which was flying near to a civilian aircraft, and the kill record was around 315 kilometers, which was amazing. And I also read this article where it is stated that our INS Vikrant led carrier battle group CBG was just around 200-300 miles away from the coast of Karachi and Gwadar. So I was just wondering, where was Vikramaditya? Why is it missing in action? जब से I don't know, but have you guys also noticed कि जब से विक्रांत आया है, INS विक्रमादित्य has lost its fame. उसके बारे में ज़्यादा बात हो नहीं रही है. Even this Operation Sindoor, no one is talking about Vikramaditya. Where has it been? But if you guys ask, then the debate या फिर the logical answer someone would give to you is कि इंडियन कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तो कुछ चाहिए. अगर विक्रांत को आप पाकिस्तान पे एंगेज कर दोगे, then you need someone to protect this big of a coastline of India as well ना. वहाँ से चाइनीज शिप्स आ गई, फिर तुम क्या करोगे? वेल, दैट इज़ व्हाट द लॉजिकल आंसर टू इट एज वेल, बट उसके बारे में ज़्यादा बात हो नहीं रही है. बोथ आर स्टेशनड इन कारवाल, कर्नाटका, तो एक्सप्लेनेबल है. इट कैन रीच द बे ऑफ बंगाल इन नॉट मोर देन 2 days. Okay, so there was actually a very famous swastika photo on the car where the bombing happened. So what Pakistan did was it bombed civilian areas, and there was actually a very funny claim कि what India did, India targeted its Amritsar का Golden Temple, and it was actually Pakistan who shot down that missile which was actually targeting the Golden Temple. This is also what I have heard, and our tribute, my heartfelt tribute, Shraddhanjali